अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी 2 रोज़ा जुडिशल कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया और जहां पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदियाल और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर समेत चारों सूबों के चीफ जस्टिस साहिबान ने तकरीर की, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर के चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने यहाँ पर खिताब किया। साथ साथ कायमकाम चीफ जस्टिस सुप्रीम अप्लेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस वजीर शकील अहमद साहब ने भी खिताब किया और यकीनन इन तमाम चीफ जस्टिस साहिबान में दो जो चीफ जस्टिस हैं उनके जो खिताब थे, उनकी जो तकारीर थी वो तवज्जो का मरकज़ बनी रही। ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस अतर साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी तकरीर तवज्जो का मरकज़ बनी। वहीं पर गिलगित बल्तिस्तान के जो कायमकाम चीफ जस्टिस हैं, चीफ जज हैं सुप्रीम एप्लेट कोर्ट के वजीर शकील की तकरीर भी लोगों की जो है वो तवज्जो का मरकज़ बनी, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह अदालतों पर जो है वो एक्टिंग चीफ जज वो खुद बतौर एक्टिंग चीफ जज वो काम कर रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान में जो केसेस का उन्होंने खुद इतराफ़ किया। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि साल से जो है वो केसेस ताख़ीर का शिकार हैं और बहुत ज़्यादा पेंडेंसी जो है वो बढ़ चुकी है। उसकी वजह यही है कि इस वक्त सुप्रीम अपील कोर्ट में वो इकलौते चीफ जज मौजूद हैं और वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और एक जज पूरे एक सूबा नुमा एक खित्ते को कैसे कवर कर सकता है। इसके साथ साथ जो वज़ीर शकील साहब हैं जज, उन्होंने ये भी कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में कोई आइनी या कोई कानूनी गारंटी नहीं है। साथ साथ उन्होंने कहा कि अदलिया भी आज़ाद नहीं है। इसकी वजह यही है कि जब अदलिया में जजेस की कमी होगी, हालांकि सुप्रीम एप्लेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान में जजेस के जो है असामियाँ खाली हैं, मुस्तकिल चीफ जस्टिस नहीं लगाया जा रहा। वज़ीर शकील साहब जब कायमकाम चीफ जस्टिस बन सकते हैं, कायमकाम चीफ जस्टिस बन गए हैं, तो उन्हें मुस्तकिल चीफ जज क्यों नहीं लगाया जाता? यही सवालात थे जो आज उन्होंने इतनी बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अपनी बड़ास भी उन्होंने निकाली। यकीनन ये गिलगित बल्तिस्तान के हर शहरी की ये आवाज़ है कि जस्टिस वज़ीर शकील साहब जो कायम मकाम चीफ जस्टिस सुप्रीम एप्लेट कोर्ट बने हैं उन्हें मुस्तकिल नहीं किया गया है ताहाल, और जबकि दीगर जो जजेस की तैनाती है वो भी नहीं की गई। हालांकि ऐसा होना चाहिए था कि जिस तरह गुज़िश्ता दिनों यकीनन एक अच्छा इक़दाम है कि जो चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान है वहाँ पर जजेस तैनात किए गए, मगर बदकिस्मती वहाँ पर भी इडहाक की बुनियादों पर जजेस तैनात किए गए। साबिक जो इडहाक जजेस थे उन्हें भी 1 साल की एक्सटेंशन दी गई। इतना मजाक गिलगित बल्तिस्तान की अदालतों के साथ शायद दुनिया के किसी जुडिशरी के अंदर नहीं होता जितना गिलगित बल्तिस्तान के अदलिया के अंदर किया जा रहा है। सियासी जमातों की जानिब से, हुकूमतों की जानिब से, वफाक की जानिब से या सूबाई हुकूमतों की जानिब से ये सारे इक़दाम बंद होने चाहिए। मुस्तकिल जजेस की तैनाती होनी चाहिए, चाहे सुप्रीम एप्लेट कोर्ट हो चाहे चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान हो। सुप्रीम एप्लेट कोर्ट में जजेस तैनात करने हैं, खाली हैं असामियाँ, वहाँ पर चीफ कोर्ट से जजेस वहाँ पर प्रमोट करके वहाँ पर लेकर आएँ। वकला में से जो अच्छे सीनियर वकला हैं उनको जजेस तैनात करें ताकि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के जो केसेस हैं वो निपटाए जा सकें। जो एक अल्तवा का शिकार केसेस हैं, जो ज़ेर अल्तवा हैं, उसकी जो पेटेंसी है वो ख़त्म हो सके। बदकिस्मती से इसी वजह से जो है हमने देखा कि इंटरनेशनल 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में चीफ जज जो हैं एप्लेट कोर्ट सुप्रीम एप्लेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस वजीर शकील ने खुलकर इजहार किया और इसी वजह से वो पूरे जो हैं वो जिस तरह वकला हैं, जजेस हैं और पाकिस्तान और दुनिया भर के जो माहिर कानून थे वहाँ पर जो जजेस हैं वो सारे उनकी तकरीर से यकीनन मुतासिर हुए, क्योंकि पहले ही खित्ते बेआइन है और वहाँ पर अदलिया जो जिस पर सबसे ज़्यादा आम शख्स का, आम आदमी का जिसका इन्हिसार एक अदलिया पर होता है, और अगर किसी के साथ जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होती है, तो वो सबसे पहले यही सोचता है कि मैं अदालत में जाऊँगा और अदालत मुझे इंसाफ फराहम करेगी। बदकिस्मती ये है कि उन अदालतों में मौजूद जो जजेस हैं, जो चीफ जज हैं या जो दीगर अमला है, उनको खुद इंसाफ फराहम नहीं किया जा रहा हुकूमतों की जानिब से, तो क्या वो साइलिन को इंसाफ फराहम कर सकेंगे? चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने अपने खिताब में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की अदलिया में जो है जजेस की असामियाँ खाली हैं, जजेस तैनात नहीं किए जा रहे हैं, और जबकि जो जजेस तैनात किए जाते हैं वो 3 साल के लिए तैनात किए जाते हैं। उन्हें न कोई मराद दिए जाते हैं, न कोई उन्हें पेंशन होती है और न ही उन्हें रेगुलाइज किया जाता है। और साथ साथ सुप्रीम एप्लेट कोर्ट में इस वक्त जजेस की असामियाँ भी खाली हैं और वहाँ पर जजेस तैनात करने पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया और पूरे
چیف جسٹس پاکستان وہاں پر موجود تھے، وہاں پر تمام سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز موجود تھے، ماہر قانون موجود تھے، وکلاء موجود تھے. اس کے بعد نیشنل کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل یہاں پر جو وکلاء اور جو ایمبیسڈرز ہیں وہ موجود تھے. ان تمام کے سامنے اپنے دل کی جو ہے بات، جو گلگت بلتستان کی عوام کی بات ہے، گلگت بلتستان کی عدلیہ کی بات ہے، وہ کھل کر انہوں نے رکھ دیا وہاں پر. قائم مقام چیف جج سپریم اپلیٹ کورٹ گلگت بلتستان جسٹس وزیر شکیل احمد نے کہا کہ گلگت بلتستان میں عدلیہ کو آزاد اور خود مختار بنانے کی ضرورت ہے. انہوں نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ گلگت بلتستان کی عدلیہ میں ججز کی تعداد بہت کم ہے، جبکہ متعدد جو ججز ہیں ان کی اسامیاں بھی خالی ہیں، اور گلگت بلتستان کی عدلیہ میں ججز کی کمی کے باعث مقدمات سال سے تاخیر کا شکار بھی ہیں. یقیناً یہ بہت جو ہے وہ حیران کن بات ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گلگت بلتستان میں قانون کی حکمرانی کے لیے عدلیہ کردار ادا کرنے سے قاصر ہے، اور اس وقت گلگت بلتستان سپریم اپلیٹ کورٹ میں وہ واحد ایک ہی چیف جج ہیں جس کی وجہ سے مقدمات کے انبار لگ چکے ہیں. گلگت بلتستان میں ججز کی پینشن اور مراد کے دیگر جو ججز کے دیگر صوبوں کے ججز کے برابر ہونے چاہیے وہ نہیں ہے، جبکہ اسی وجہ سے قانون کی فراہمی بھی متاثر ہو رہی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کی عدلیہ میں ججز کی خالی اسامیوں پر جج تعینات کیے جائیں. گلگت بلتستان کی عدلیہ میں ججز کی تعیناتی کے ساتھ ساتھ انہیں مراد اور پنشن کو ریگولائز کرایا جائے. چیف جج سپریم اپلیٹ کورٹ گلگت بلتستان جسٹس وزیر شکیل کی یہ جو تقریر ہے 2 روزہ جو انٹرنیشنل کانفرنس سے اس کی سب سے زیادہ توجہ کا مرکز بنی. جو چیف جسٹس اسلام آباد ہیں ترمن اللہ صاحب، ان کے بعد سب سے زیادہ لوگوں کی جو توجہ کا مرکز بننے والی تقریر سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان کے چیف جج کی تھی. تو اب ناظرین میں آپ کو جو چیف جج ہیں سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان کے جسٹس وزیر شکیل صاحب نے اپنی تقریر میں کیا کہا، کیونکہ انگلش میں تھی، اس سے پہلے میں نے اردو میں اس لیے بتایا تھا کہ ہمارے اردو کے ناظرین سمجھ سکیں. تو اب جو ان کی انگلش کی تقریر ہے وہ پوری تقریر بھی میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں کہ آپ خود سنیں کہ انہوں نے اپنی تقریر میں کیا کہا ہے. The acting Chief Judge of the Supreme Appellate Court of Gilgit-Baltistan, Honorable Mr. Justice Wazir Shakil Ahmad. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable Mr. Justice Umar Atta Bandial, the Chief Justice of Pakistan, all the Honorable Judges of Supreme Court, Honorable Justice Supreme Court Azad Jammu and Kashmir, Honorable Acting Judge Federal Shariat Court, all the Chief Justices of High-Courts, Secretary Line, Justice Commission of Pakistan, representative of Attorney General of Pakistan, learned members of District Judiciary and Academia, all learned office bearers, members of Bar Council and Bar Associations, respectable foreign guests on video link, press and electronic media, respectable guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Let me congratulate the Supreme Court of Pakistan and especially the Honorable Chief Justice for organizing the present conference on the eve of 75th year of independence of Pakistan. Much has been said about the subject by my learned brothers before me, and very little is left for me to speak about. Nevertheless, I shall try to make my talk carry some new aspect of issue. Every individual, organization, organ, and at the top, every nation must review the action, tasks, accomplishments, performance, successes, failures, and the like, periodically being a core element of improvement in every aspect. This conference is, in fact, its core theme goes administration of justice, reflecting on the past and looking towards the future, is nothing but to review the overall performance of the institution responsible for administration of justice in the past 75 years. There could be no better occasion for such exercise than the completion of 75 years of independence. Due to the paucity of time, Maghrib ka time bhi hone wala hai,
So I shall put forward some words regarding the role of judiciary, of Gilgit-Baltistan. اور میں ان کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا ہے تو میں مغرب کی وجہ سے وہ جناب کی اجازت سے اپنی تقریر کو جو ہے وہ موسٹ آف دی جو پارٹ جو ہے وہ آئی گوئنگ ٹو اسکپ. Role of judiciary in Gilgit-Baltistan, I, being head of the judiciary of Gilgit-Baltistan, would like to bring the dismal situation of judiciary in Gilgit in the context of today's mood and its core theme. The constitutional history of GB since 1948 is no secret. There is still no constitution, no fundamental rights under constitutional guarantee, nor independent judiciary. As I highlighted above, supremacy of constitution and rule of law is dependent on independent judiciary. Without going into the detail, suffice it to say that Chief Judge of Gilgit-Baltistan and judges of the apex court in GB are appointed for 3 years, like contract appointment, without any pension and other pensionary benefits. The appointments in the Chief Court and Supreme Appellate Court are pure prerogative of executive, due to which posts of Chief Judge and judges are not filled for years and years, and ad hocism is the rule. Senior judges in the Supreme Appellate Court is not appointed as Chief Judge, and direct appointment of Chief Judge is made for 3 years without pension, which is contrary to the independence of judiciary. Valid judiciary, valid expectancy, and constitution. When a judge of a chief is elevated to Supreme Court, he is retired after 3 years without even reaching 62 years, which is his age of superannuation in Chief Court, and without pension of Supreme Appellate Court. At present, only acting Judge GB is only acting Chief Judge GB is the only judge in Supreme Court, jo aakhar khud hai, due to which cases are being delayed for years and years. The matter came up before the Supreme Court of Pakistan at least twice, and authoritative judgments are also passed to ensure independent judiciary, including appointments, but those judgments could not be implemented so far. To the extent of GB, I can say that no significant role can be played by the judiciary of GB in the rule of law or supremacy of constitution till an independent judiciary is made in place in GB. Now, at last, I have some recommendations pertaining to the GB specific. Number one is a mechanism be devised to fill all vacant posts in superior judiciary of GB in time with less involvement of executive. Appointments in superior judiciary of GB should be for same tenure as that of superior judiciary in Pakistan. The superior judiciary in GB should be given a pension and pensionary benefits at par with the superior judiciary of Pakistan. Principles of seniority should be adhered to while appointing Chief Judge and judges of Supreme Appellate Court. تو یہی میری گزارشات تھی سر. I thank you all. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.